Next we have next application, Mirage formation. Mirage formation, basically it's an optical illusion and takes place in hot summer days. Optically stratified medium, different layers having different refractive index. The layers in contact with Earth are hotter and rarer. Colder and denser. You had some object placed over here. Light reflected by the object. We say it's moving from denser to rarer medium. So it bends away from normal. Like angle of incidence goes on increasing. At one particular layer, this angle becomes greater than critical angle. And the ray gets reflected upwards. Now the light is moving from नीचे से ऊपर जाएगी तो it's moving from rarer to denser, rarer to denser, and it bends towards normal. And we say a virtual image of tree. सर आपने एक बार दोबारा रिपीट कर दो, एक बार आपने जो बोला था. Virtual image of tree will be formed. कि path of ray तो ऐसे होगा. Virtual image is formed on the ground. So you can write. कल जो explain किया था वही है, उसको लिखना है हमने. So you can write mirage formation. Mirage formation is an optical illusion. Mirage formation is an optical illusion which takes place on hot summer days. Which takes place on hot summer days. The atmosphere becomes optically stratified. The atmosphere becomes optically stratified with different layers having different refractive index, with different layers having different optically stratified with different layers having different refractive index. The layers in contact with Earth, the layer in contact with Earth are hotter and rarer. And as we move upward from the surface of Earth, and as we move upward from the surface of Earth, as we move upward from the surface of Earth, medium becomes colder and denser. Medium becomes colder and denser. As shown in the figure, the light reflected by the tree, as shown in the figure, light reflected by the tree
when it moves downwards, is moving from denser layer to denser layers to rarer layers of atmosphere. Therefore, the rays bends away from normal. Therefore, the rays bends away from normal, and angle of incidence rays bends away from normal, and angle of incidence goes on increasing, and angle of incidence goes on increasing for one particular layer. The angle of incidence is greater सर than critical गोज ऑन angle. इंक्रीजिंग के बाद क्या बोला था? Angle of incidence goes on increasing for one particular layer. Angle of incidence is more than critical angle, and the rays gets reflected back in upward direction. Thus, due to total internal reflection, a virtual and inverted image. Thus, due to total internal reflection, a virtual and inverted image is formed on the ground. These inverted images gives the appearance of water due to atmospheric disturbances and distortions. Gives the appearance of water due to atmospheric disturbances and distortions. Because ऐसे जैसे मैंने straight line में layers बनाई हैं, ऐसे तो layers भी नहीं बनेंगी. So ये तो एक geometrical figure बना दी, but otherwise it gives the appearance of water. Note में लिख लो इसके नीचे. Similarly, in extremely cold countries, the layers in contact with Earth are colder and denser, whereas upper layers are in contact with Earth are colder and denser, and upper layers are hotter and rarer. Thus, light reflected by an object at sea level light reflected by an object at sea level moves upward from denser to rarer medium, suffers total internal reflection, suffers total internal reflection at one particular layer, and the rays are returned back towards Earth. Rays are returned back towards Earth, forming virtual image of object
forming virtual image of the object in the sky. This phenomena is called looming of ships. This phenomena is called looming of ships. Next is relation between real and apparent depth. चलिए बस डायग्राम दिखा दो किसी वाले का जो मैं स्क्रीनशॉट लेंगे मैं प्रूफ नहीं कर पाया वो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वहां से ड्रॉ कर देना डायग्राम। बाद में ड्रॉ कर देना, पीडीएफ में से देख के कर लेना। थैंक यू और आपका टेस्ट होता है तो सर को बोल सकते हो कि हमारी क्लास होती है। इतना तो बच्चे ऑफलाइन में भी बोल देते थे, आप ऑनलाइन में भी नहीं बोलते। आप कह सकते हो कि हमारी क्लास है, हम किसी और टाइम दे देंगे, या सर टाइम चेंज कर देते हैं। वो ऑफलाइन में भी कर देते थे तो आप ऑनलाइन में ही नहीं कह रहे। Relation between real and apparent depth. We assume an object at any point O. A first medium denser object in denser medium and it's observed from rarer medium. Light reflected by the object. It's moving from rarer to denser medium. Say normal. This is angle of incidence I. The ray is moving from denser to rarer. It bends away from normal. मतलब इस रे का जो एक्चुअल पाथ था वो ये था, but it bends away from normal. Forming an image somewhere over here. Virtual image. इसका जो वाटर सरफेस से डेप्थ होगी, दिस इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। और जहां पे ऑब्जेक्ट एक्चुअल पड़ा है, दैट इज द रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, डी आर। तुमने डी आर और डी ए में रिलेशन निकालना है। दिस एंगल इज आर, दिस विल ऑल्सो बी आर। So AP2 is DA and AP1 is DR. So हमने इन दोनों में रिलेशन निकालना है। पहले डायग्राम देखो, समझ में आ रहा है कि रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इसको पीछे एक्सटेंड करके यहाँ पे इमेज बना ली, वर्चुअल इमेज। सबने डीए और डीआर में रिलेशन लगाना है। सिंपल स्कूल का आर्टिकल है, स्नेल्स लॉ से हो जाएगा, एक दो स्टेप है सिर्फ। So you can draw this diagram, then we will write. सेम ऑपोजिट भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इन रेयरर एंड ऑब्जर्वर इन डेंसर।
बन गया डायग्राम. So you can write, consider point object O. Consider a point object O placed in a denser medium of refractive index mu1 having real depth dr, having real depth dr having real depth dr from the interface of two mediums. The light reflected by point object, light reflected by point object moves from denser to rarer medium and it bends away from normal and it bends away from normal. Thus, a virtual image of object, this virtual image of object is formed at virtual image of object is formed at I. अब बोर्ड वाली डेरिवेशन कर रहे हैं तो एक assumption के साथ करते हैं कि I and R को small लेके using Snell's law sin I by formed at sin R I. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो refractive index of denser medium relative to the other medium. स्पेशल केस होता है if rarer medium is air and denser medium is water.
So real depth upon apparent depth is 4/3 if object is in water and observed through air. IP2 और OP1 equal है क्या चीज? सर IP2 और OP1 equal है इक्वल ही है ना, देखो डायग्राम देखो, ये दोनों डिस्टेंसेस तो इक्वल ही हैं। नॉर्मल के साथ ही तो बनाए हैं दोनों डिस्टेंसेस। इसके नीचे नोट में एक फॉर्मूला लिख लो, ये आपका एमसीक्यूज में काम आएगा और एंट्रेंस में, स्कूल में तो इतना नहीं चलेगा। कैन राइट अ फॉर्मूला इन नोट्स। Cauchy's formula. Cauchy's formula is mathematical relation. Cauchy's formula is mathematical relation between refractive index and wavelength of light used. Between refractive index and wavelength of light used. According to Cauchy's formula, refractive index of a medium is related to wavelength as, and so on. आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। Z की वेवलेंथ बिकॉज वॉयलेट से ज्यादा है, सो दिस इंप्लाइज वॉयलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड से ज्यादा होगा। कि Z के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम हो जाएगा, और वॉयलेट के लिए ऑपोजिट। His wavelength is maximum for red. Its refractive index is minimum. इसमें कई बार बोर्ड में शिफ्ट के क्वेश्चन आते हैं। शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज कितना है? जैसे रियल डेप्थ थी dr, apparent depth is dA. So shift is dr into 1 minus 1 by mu. Mu is refractive index of denser medium with respect to the other medium. बिकॉज शिफ्ट का मतलब है कि रियल इमेज यहाँ बन रही थी, रियल डेप्थ ये थी, apparent depth is at dA. This is shift dr minus dA, and dA हमने निकाला, it's dr by mu, ऊपर जो फॉर्मूला डिराइव किया था रियल और apparent depth में। सर एक बार कॉचीज फॉर्मूला समझ नहीं आया। कॉचीज फॉर्मूला तो रटना है, उसकी डेरिवेशन नहीं करनी है आपको, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, उसको याद ही रखना है। सिर्फ बीएससी का फॉर्मूला है, बट काम आएगा एमसीक्यूज में। सर एक बार यूज का सेकंड में वो नहीं समझ आ रहा, मतलब फॉर्मूला क्या है। मतलब जब आगे जाके आपको पूछेंगे ना एपरेंट डेप्थ किसकी ज्यादा, रेड की या वॉयलेट की, तो फॉर्मूला म्यू पे डिपेंडेंट और म्यू लैम्डा पे डिपेंडेंट है।
तो सारे कलर सेम डेविएट नहीं होंगे ना, डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डेविएट होंगे। जैसे यहाँ पे म्यू, रेड के लिए हमने लिया है कि रेड के लिए म्यू मिनिमम है, रेड के लिए म्यू मिनिमम है, तो शिफ्ट मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा? मिनिमम। म्यू की वैल्यू मिनिमम है तो 1/μ मैक्सिमम हो जाएगा, 1 - 1/μ मिनिमम हो जाएगा। तो वैसे करते हैं हम क्वेश्चंस। तो इसलिए फॉर्मूला चाहिए आपको कि बेसिकली आपको इतना याद रखना, लैम्डा जितना ज्यादा म्यू उतना कम। बिकॉज कुछ बुक्स में सिर्फ a+b/λ² दिया होगा, अदरवाइज ये पूरी सीरीज होती है। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन रियल एंड एपरेंट हाइट। रियल एंड एपरेंट हाइट मीन्स मेरे पास ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, जैसे फिश किसी बर्ड को देख रही है, तो फिश देख रही है तो फिश डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर रेयरर में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की रियल हाइट जो है दैट इज HR, light reflected by object it's moving from rarer to denser, it bends towards normal. towards normal। ये इसका एक्चुअल पाथ था, it bends towards normal and a virtual image is formed that this is apparent height HA। So, उसके ऑपोजिट हो गया ये फिनोमेना। Angle of incidence is I, so this angle is I, this is R। तो डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं इसमें। इसमें ऑपोजिट आ जाएगा कि रियल हाइट इज म्यू टाइम्स मोर देन एपरेंट हाइट। एपरेंट हाइट इज म्यू टाइम्स मोर देन रियल हाइट, कि एपरेंट हाइट ज्यादा, उसमें एपरेंट डेप्थ कम थी, इसमें एपरेंट हाइट ज्यादा आएगी। So we can write, consider an object, consider an object O placed in a rarer medium of refractive index mu1
and it is observed from denser medium of refractive index mu2, and it is observed from a denser medium of refractive index mu2. The light reflected by the object moves from denser to rarer medium, rarer to denser medium, and bends towards the normal, thus a virtual image of the object is formed at I. Virtual image of the object is formed at I using Snell's law. सेम उसी मेथड से करेंगे. Apparent height is mu times real height. Mu is refractive index of denser medium again, relative to rarer. Refractive index of denser medium relative to the rarer medium. सर हम इसमें ये एग्जाम्पशन लेट हो रहे हैं कि मतलब इट इज वेरी स्मॉल. बोर्ड की है ना, बोर्ड की डेरिवेशन है. अदरवाइज फॉर्मूला अच्छा नहीं बनेगा. बोर्ड फॉर्मूला अच्छा बनाने के लिए assumptions लेता है हमेशा. इसमें देखो कुछ नहीं आ रहा समझ, तो दोनों रिजल्ट याद रखने हैं बस. एपरेंट डेप्थ म्यू टाइम्स कम होती है, रियल हाइट म्यू टाइम्स ज्यादा होती है.
So you can write a numerical based on this. Find out the following in the figure shown below. Find out the following in the figure shown below. A part is apparent speed of fish as observed by the bird. Apparent speed of fish as observed by the bird. B part is apparent speed of bird as observed by the fish. Apparent speed of bird as observed by the fish. Apparent speed of bird as observed by the fish. हमें ऐसे दिया ये इंटरफेस यहाँ पे एक फिश है which is moving upward with 12 centimeter per second. Bird is coming down with 24 centimeter per second. हमने बताना apparent speed of fish as observed by bird कि bird को fish की speed क्या लग रही है, fish को bird की speed क्या लग रही है. Apparent speed निकाल दो दोनों की. करो सॉल्व इसको. रिलेशन आपके पास है. Fish as observed by bird. ऐसे करो. 9 centimeter per second. ये इसकी रियल डेप्थ. That's a 33 meter per second. ये इसकी रियल हाइट. First part is apparent speed of fish as observed by bird. मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा और इसको ट्रिकी बनाता हूँ. ये सरफेस भी मूव कर रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से. कि वाटर लेवल भी बढ़ रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से. कैसे करें? As observed by bird. करो सॉल्व. Apparent speed of fish as observed by bird. अगर मैं आपसे पूछूं बर्ड को फिश का डिस्टेंस कितना नजर आ रहा है. फिश इज एट अ डेप्थ ऑफ dr by mu. सोच के बोलो.
+1 कितना? सर +1 हो जाएगा वो वीडियो बन जाएगी +1 क्या? कुछ भी। मैं आपसे अगर सिंपल, पहला तो ये स्पीड तो बाद में आएगी ना, मैं पहले आपसे पूछूं apparent distance between apparent distance of fish as observed by bird. dr by mu plus hr dr by mu plus hr। तो स्पीड निकालो फिर कितनी। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो स्पीड आ जाएगी। hr तो फिक्स्ड है, ये चेंज कर रहा है। एचआर चेंज कर रहा है। चेंज कर रहा है बिकॉज वाटर सरफेस भी ऊपर जा रहा है और बर्ड भी नीचे आ रहा है। कैसे करें? कैसे करें इसको सॉल्व? दूसरा पार्ट भी अभी तो apparent speed of bird as seen by the fish। थोड़ा सा एक स्टेप है बस अब। जब हम बोलते हैं एज ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड, इसका मतलब क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को किस रिलेटिव सॉल्व कर रहे हैं? बर्ड के रिलेटिव सॉल्व कर रहे हैं। बर्ड के रिलेटिव सॉल्व कर रहे हैं, मतलब बर्ड के ऊपर आप खुद भी बैठे हो गया सॉल्व। आप काइनेमैटिक्स लगा दो। अगर आप बर्ड के रिलेटिव सॉल्व करोगे तो रिलेशन क्या बनेगा? बर्ड के रिलेटिव सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपको बर्ड को रेस्ट पे मानना पड़ेगा। यही मतलब होता है ना, लिखो यस। कंसेप्ट। if we are solving the problem relative to bird if we are solving the problem relative to bird, then bird is at rest relative to the reference frame. Bird is at rest relative to the reference frame. And velocity of image with respect to surface. Velocity of image with respect to the surface. सरफेस रेस्ट पे होता तो मैं सिंपल वेलोसिटी लिख देता, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ना करना पड़ता। बिकॉज हमारे पास ये रिलेशन है कि इमेज डिस्टेंसेस हमारे पास प्रैक्टिकली ये रिलेशन है, इमेज डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद अपॉन म्यू। यही फॉर्मूला बोला था आपने। तो
तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस. वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस कितनी है? वेलोसिटी ऑफ इमेज -1. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस कितनी है? 12 + 1 12 - 1. रिलेटिव वेलोसिटी ये ऊपर जा रही है फिश. -1. 12 - 1. So you get Vi -1 is equals to 3/4 into 11, 33/4. कितना आंसर आया? 37/4 मीटर पर सेकेंड. ये Vi क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, या वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू बर्ड? With respect to ground. तो हमने बतानी क्या थी? विद रिस्पेक्ट टू Bird. बर्ड. But वेलोसिटी रिलेटिव टू बर्ड कितनी हो जाएगी? बर्ड नीचे आ रहा है, इमेज ऊपर जा रही है. 37/4 plus 24. This is 496 plus 37. 96 plus 37, 133/4 मीटर पर सेकेंड. ये आंसर है. सिमिलरली अब सेकेंड पार्ट करो. वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिलेटिव टू फिश. वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिलेटिव टू फिश. अब रिलेटिव टू फिश तो पहले फिश के फ्रेम में सॉल्व करो. फिश को रेस्ट पे मान के. इसमें भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं. अब इसमें म्यू से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? Multiply. multiply. सो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू सरफेस. ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है? बर्ड. तो क्या लूं इसको? Velocity of object relative to surface. Object is bird. 11. Velocity of object relative to surface. 11 कहाँ से आ गई? 25. So that is a fish. 23 या 25? 25. 25. 25 या -25? डाउनवर्ड है. -25 बिकॉज ये मैंने अपवर्ड वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया था 1. So you get Vi is equals to -100/3 नेगेटिव मींस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वेलोसिटी. तो रिलेटिव टू बर्ड बताना है तो so relative to fish this is velocity relative to ground. फिश ऊपर जा रही है, वेलोसिटी नीचे आ रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें? Add. Add. इस क्वेश्चन को ना एक बार दोबारा से देखना घर जाके. 36 plus 97. 133/3 पहले आई थी 133/4. now it's 133/3.
नीड ऑफ अ सेकेंड। रियल और एपरेंट हाइट में इससे टफ क्वेश्चन नहीं होता, मैंने सब ले लिया। नॉर्मली आपको एग्जाम में आता है एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सरफेस भी रेस्ट पे है, तो वो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। तो मैंने सब ले लिया, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, सरफेस भी मूव कर रहा है। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आप रियल एंड एपरेंट हाइट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट राइट। A concave mirror. A concave mirror is placed inside water. A concave mirror is placed inside water with its shining surface upwards and principal axis vertical. Rays are incident. Rays are incident. Parallel to the principal axis. Rays are incident parallel to the principal axis. Find. Rays are incident parallel to the principal axis. Find the position of final image. Find the position of final image. हमें ऐसे गिवन है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 40। This mirror is placed inside water. Water surface की से डेप्थ दी है 30। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, and rays are incident normally on the surface. ये rays है। So हमने बताना है इमेज किधर बनेगी। Image. Find the position of image. ये R is equal to 40 क्या है? Radius of curvature mirror का। सब फोकस पे बनेगी हमें। फोकस पे बनेगी बिल्कुल। तो हमें बताना है ना उसकी वैल्यू कि फाइनल इमेज हमें दिखेगी कहाँ पे, बनेगी तो फोकस पे। फोकस मतलब 20।
इमेज फोकस पे बनेगी, मतलब इमेज बन गई इसकी यहाँ पे। इसका सरफेस से डिस्टेंस कितना होगा? 10. बिकॉज फोकल लेंथ 20 है। यहाँ इमेज बनी, हमें दिखेगी कहाँ? रियल डेप्थ हो गई ना 10, तो एपरेंट 7.5. 7.5. 7.5. So image is formed at focus. There is 20 centimeter from mirror. And real depth is apparent depth is 10 by mu. तो इसकी इमेज जो है यहाँ पे कहीं पे बन जाएगी, मतलब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया एंड इमेज यहाँ पे कहीं पे एट अ डेप्थ ऑफ 7.1 7.5. क्लियर है सबको ये? Yes, yes, sir. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। ये बेसिकली प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन है। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन पे। एक जो हमने कल क्वेश्चन किया था फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश, वो फॉर्मूला जो निकाला था पाई एच स्क्वायर व म्यू स्क्वायर माइनस 1, उस पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। मेनली क्वेश्चन आएंगे कर्व्ड सर्फेसेस पे, तो सिंगल कर्व्ड सरफेस से शुरू करेंगे एंड फिर उसको बढ़ाते जाएंगे कि डबल कन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा, डबल कनकेव लेंस है तो क्या होगा, कन्वेक्सो कनकेव, कन्वेकेवो कन्वेक्स। फिर अगर हम लेंस की एक साइड को पॉलिश कर दें, लेंस की एक साइड को पॉलिश कर दें तो क्या होता है? दोनों रिफ्लेक्टिव हो जाते साइड स्टार्ट्स एक्टिंग एज मिरर। मतलब जैसे Mirror. मेरे पास कन्वेक्स लेंस है ना, जैसे कन्वेक्स लेंस है मेरे पास, एक डबल कन्वेक्स लेंस, मैंने इसकी साइड को ऐसे पॉलिश कर दिया, तो इस केस में क्या होगा? दिस सिस्टम एक्ट्स एज टू लेंसेज इन वन मिरर, बिकॉज पहले लेंस में से रिफ्रैक्शन हो गई, इसको थोड़ा सा पीछे करके बना लो, मतलब ऐसे बनाओ समझने के लिए। तो पहले लाइट आएगी, वो लेंस में से पास करेगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर दोबारा लेंस में से पास करेगी। तो हम कहते हैं दिस कॉम्बिनेशन एक्सेस टू लेंसेज इन वन मिरर। तो लास्ट, ये लास्ट होता है, लास्ट में यहाँ पे जाके हम इसको खत्म करते हैं लेंसेज को। सो पहले सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन करेंगे कि आपके पास अगर ऐसे कर्व्ड सरफेस है तो इमेज किधर बनेगी। डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, इधर देयर, इधर डेंसर, इधर देयर, या इधर डेंसर, वो 6 केस आते हैं। फिर उसके बाद 6 केस करने के बाद हम दोनों सरफेस को कर्व करके करते हैं। सो कल शुरू करते हैं कर्व्ड सरफेस को।